Hello, 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 hello. Assalamualaikum sir. Salam. See, this is the last topic we are discussing. The Sittu theorem and its application to evaluate the integral of the type. This is the type minus infinity to plus infinity f of x dx. Here we are using one formula of intermediate. Whenever the limits are from negative to positive, and that too goes to infinity, that can be written as a formula. This f of x will become twice from 0 to not a, it is infinity actually. It is a writing mistake here. Better to make it before with the infinity. And then f of x is a even function. The same function will become 0 if f of x is odd. And now we are going to talk about this semicircle here from minus infinity to plus infinity. Only positive quadrant will be taken. And this is, you see, this is of course origin. This is CR. So one concept here I am writing. Yeah. So according to our question, if it is from minus infinity to plus infinity, f of x dx can be written as, look at carefully, it is not f of x dx, which is actually f of the dz will come. This is f of z dz. This is equals to integral minus infinity to plus infinity f of x dx plus, actually I want to talk about minus infinity to plus infinity f of z dz की वैल्यू होना है तो that is minus infinity to plus infinity f of x dx plus ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये वाला पार्ट तो सेमी सर्कल पूरा कवर हो मीन्स फ्रॉम सी आर दिस इज एफ ऑफ जेड डी जेड एफ ऑफ जेड डी जेड ये कॉन्सेप्ट है आपका अभी क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे एंड बी केयरफुल वी आर डिस्कसिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल दिस वन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल वी आर डिस्कसिंग ओके राइट Yes, sir. चलिए अभी देखिए प्रॉब्लम देखेंगे कैसा इजीली अपन इसको सॉल्व कर दें इट्स if you understand the previous class, this class is also will become very easy for you because everything depend upon the previous class only. So one question I am doing which came in our 2025 question paper. Last year we are autonomous and we had the first batch. In that batch, this question came for 6 months minus infinity plus infinity x square. Not this. I'll tell you which question will came. ये नहीं आया exactly. X square plus 1 into x square plus 4. This question we are solving now. I'll tell you which question came in exam. This question came in exam 2025. Same evaluate, same minus infinity plus infinity. X square is also there, but instead of 1, we have like that a square, and it is x square plus b square, and it is given. The answer is also there. It is asking to show that pi by a plus b is the answer.
ओके, अभी मैं अपन इसको सॉल्व करेंगे पिंक वाला, and then this orange color you can understand how it is becomes easy if you know this concept. To start our work solution, okay, we can start like that. We know that minus infinity to plus infinity f of z dz, f of z dz can be written as minus infinity to plus infinity f of x dx plus cr f of z dz. So minus infinity to plus infinity, then from c to r, then total semicircle will cover. This is taken as equation number 1. Okay. Yes, Okay. sir. Okay. Now you see what happened. तो थोड़ा सा और क्लियर करके लिखेंगे, एक्चुअल फार्मूला ये है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है फार्मूला में. देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द फार्मूला. Integral over c it is. Integral over c f of z dz can be written as, यहाँ पर भी वो चेंज आना चाहिए. It is from minus r to plus r f of x dx plus from c to r cr f of z dz. This is taken as equation. Okay. After this one, you see what happened if I am taking limit r tending to infinity and applying for this function. r की प्लेस पर अगर इंफिनिटी रखे तो क्या हो जाता, बोलिए. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. f of x value is our question. It is x square by x square plus 1 into x square plus 4 into d. And same r tending to infinity if I am applying here. Limit r tending to infinity. अच्छा ये देखिए, अगर अपन ये सेमी सर्कल को ये रियल वैल्यूज को एक्सटेंड करके इंफिनिटी तक लेके चले गए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लेके चले गए, तो देन ये जो सर्कल है ये पूरा एक्स एक्सिस को टच कर देता. इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0. तो ऐसा लिखेंगे Yes, sir. अपन, r टेंडिंग टू इंफिनिटी सी आर f of z dz will become 0. So this value and this value if you substitute in equation number 1, तो इक्वेशन नंबर 1 कैसा बन जाता देखिए आप. Substitute in 1. Switch. See what happened. Integral over c f of z dz f of z dz is equals to, it is minus infinity to plus infinity. It is f of x dx value is x square by x square plus 1 into x square plus 4 into dx. This is integral over c. Look at difference. ये वैल्यू अगर f of x हो रहा तो f of z को कैसा लिखेंगे अपन, क्या लिख सकते हैं, ओनली चेंजेस इज z स्क्वायर बाई, बोलिए
Z square plus 1 into, Z square plus 4. that's only the difference. Z square plus 4 dz is equals to, it is minus infinity to plus infinity, x square by x square plus 1 into x square plus 4 into d। ठीक है। और अपना क्वेश्चन को अपन z में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो z वैल्यू इज नथिंग बट x वैल्यू। ओके, अगर इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इसके इक्वल ही है ना। Yes, sir. तो अपन ये पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं खाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना काम रेगुलर स्टार्ट करेंगे। द पोल्स ऑफ, बोलिए यहाँ से शायद आपको करने आ रहा। द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर। अच्छा, इससे पहले एक और थोड़ा सा एक और स्टेप लिखेंगे तो आपको पोल्स कैसा निकालना है आसान समझना है। देखिए अब यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंटीग्रल, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। 2 में यहाँ पर इसकी वैल्यू लाते हैं सबसे। जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई, a plus b into a minus b. It has becomes a square minus b square now. Yes, sir. Yes, and this can be written as z plus 2i into z minus 2i into dz. So clearly the poles of f of z are, the poles of f of z are, बोलिए कितने पोल्स आ सकते हैं। z is equal to इसका अपोजिट माइनस आई, Minus, कामा minus प्लस I आई, कामा plus I माइनस 2i minus 2I प्लस 2i plus आर द पोल। 2I. अब अपना जो सर्किल है वो सेमी सर्किल है, राइट। अपन दो टाइप्स के इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे, देखें मैं अभी आपको बोला। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज 0 to 2 पाई वाला कॉन्सेप्ट, जिसको अपन यूनिट सर्किल से, मतलब सेंटर 0, 0 रेडियस 1 यूनिट से देखते हैं। अब ये जो सेकंड टाइप का इंटीग्रल है, इसका जो फिगर है वो फिगर है सेमी सर्किल। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में अभी आपको सेमी सर्किल के बारे में बता दिया। दिस इज द सेमी सर्किल। So the poles, how many poles will comes under the circle and how many poles will comes outside the circle? You see, plus I. Plus I means यहाँ पर हो सकता, माइनस आई तो आउटसाइड हो जाता है इधर। ठीक है, माइनस आई, दिस इज माइनस आई विल लाइज आउटसाइड द सर्कल, एंड देन 2i, 2i मीन्स 2i, ये क्या है यहाँ पर, इट इज -2i and +2i। So only positive poles will comes under the circle and the negative poles will not comes under the circle। ये माइनस आई आउटसाइड एंड -2i, ये भी -2i भी आउटसाइड। तो ये सर्किल के जो पॉजिटिव पोल्स आते हैं, कभी भी आप याद रखें पॉजिटिव पोल्स को ही अपन लेना है, नेगेटिव पोल्स। अब्दुल बारी कम हियर। तो z is equal to plus I and z is equal to 6, z is equal to plus 2i 2I are the poles, which कभी lies भी पॉजिटिव पोल्स under बोलना, the देखिए मैं circle. बार बार बोल रहा हूँ आपको, नेगेटिव पोल्स नहीं लेना है। पोल्स लाइज इनसाइड इनसाइड सी। तो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर भी रेसिड्यू फाइंड आउट करके तो ऐड करेंगे, है ना, वही कर रहे ना अभी तक अपन। Yes, sir. रेसिड्यू एट आई, व्हाट इज द फार्मूला, लिमिट z tends to I, Z tends to I, z minus I Z minus into I f of z। upon Z. This is equals to limit z tending to I, z minus I into this our value, this is our f of z। ये पूरा, ये वाला
आपको मैं एरो से दिखा देता हूँ. दिस इज आवर f of z. Okay. So let us plug in here. Get z square by z minus I into z plus I. Okay. Into चाहे तो आप इसको z स्क्वायर प्लस 4 लिख लो या फिर अलग अलग करके लिखो, नो प्रॉब्लम. Why? Because actually I want to cancel these two and applying the limit. Means wherever z is there, we put what to put? I. So we put, if we put here for the numerator, we get I square. Denominator is I plus I is 2I into z value is I square value is minus 1. I square value is minus 1. Yes or no? Yes, sir. Minus 1 plus 4. Now if you simplify this, you get I square value is minus 1 divided by 2I into 4 minus 1 is 3. So we can say that minus 1 by 6I is our answer. It is the pole of Minus 1 by 6i. minus 1 by 6I is the pole. Now find out residue at another positive pole, that is 2I. This is equal to limit. Tell me now. You can tell me now. बोल सकते हैं आप, बोलिए. बोलिए. Uh, बोलिए. z tends to 2I. 2i. That tends to 2I. Z minus 2i. Z minus 2I into Z f of z. square by F of z. That is the next step. This is limit. Z tends to 2I into z minus 2I into f of z value is 1 by z square plus 1. We don't want to split here. But this one we can z minus 2I into z plus 2I. What happened? What happened? These two are cancelled. These two are cancelled. And applying the limit. Wherever z is there, we put 2I. So becomes 1 by, not 1 by, sorry, it is z square. Z square means if you square it, we get 4I square. And z square value is 4I square plus 1. 4I square ही होता ना? yes, sir. Into z value is 2I plus 2I is 4I. And this is numerator I square is minus, means it is minus 4. This is minus 4 plus 1 into 4I. It is becomes minus 4 divided by, it is minus 3 into 4I. This 4 and this 4 cancel. Minus minus also cancel. 1 by 3I. 1 by 3I is the pole at that is equals to 2I. Now we can take the sum of these two. अच्छा, be careful. We are actually ये वैल्यू अपन फाइंड आउट करने जा रहे थे. x के टर्म्स में अपने को क्वेश्चन का आंसर चाहिए. अपन z में कन्वर्ट करके सॉल्व करें. z में ही कर सकते हैं अपन सॉल्व. तो ये z का जो भी आंसर आएगा वो x का ही आंसर रहेगा एक्चुअली. ठीक है. Yes, sir. यहाँ लिखेंगे बाय रेसिड्यू थ्योरम. बाय रेसिड्यू थ्योरम. Residue theorem. Integral over c f of z dz is equals to 2 pi I into the residue at positive pole I plus residue at another positive pole, that is 2I. This is equals to 2 pi I. This is equals to 2 pi I
into residue at I. Get our answer is got it. Our answer is minus 1 by 6i plus 1 by 3i. ये चाहे ना देख लीजिए आप एक बार. Want to see that? This one is Yes, sir. यही आया. okay. This one, if you simplify, we get 2 pi I. What is the LCM? 6i will be the LCM, of course. So minus 1 plus 2i. Okay. 2i के y, only 2i. What happened? What is the answer now? 2 pi I into 1 by 6i. I से I cancel. 2 1s are 2 3s are cancel. To get it, answer is pi by 3. ये किसका आंसर pi by 3 है? इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड. एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आपके पास? जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी जेड. इसका वैल्यू pi by 3 है. तो बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3 using 3 into where is 2? This is 2. This is 2. इसकी वैल्यू आपको आ गया. आंसर इज pi by 3. तो हेंस इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स. वी गॉट इट. आवर आंसर इज व्हाट? pi by 3. ओके. देखिए यही प्रूव करना है कि देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन देखो. सॉरी इवैल्यूएट लिखा हूँ. कोई बात नहीं. तो pi by 3 इसका आंसर आएगा. अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ये जो क्वेश्चन है 2025 के पेपर में. अब जरा देखिए लॉजिक. तो अपना ऐसे क्वेश्चन ही लिखेंगे पूरा. एक दूसरा क्वेश्चन है. ये अपना 2025 के पेपर में आया था. So that integral minus infinity plus infinity x square by x square plus a square into x square plus b square into dx is equals to compulsory one question from this improper integrals. contour integration में से कंपल्सरी एक क्वेश्चन है. लास्ट टाइम इसमें से पूछा था. हो सकता है इस बार 0 to 2 pi में से पूछे. अच्छा, आप इसको अगर इससे कंपेयर करके इसका आंसर निकालना है तो इफ यू कंपेयर व्हाट इज द ए वैल्यू, कैन यू टेल मी दैट? कंपेयर करें तो ए वैल्यू 1 आ रहा देखिए. Yes, sir. और बी वैल्यू 2 है ना. 2 स्क्वायर. नाउ 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन में ए की प्लेस पे 1 और बी की प्लेस पे 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाता? ऐसे ही बन जाता. देख लो. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई ए वैल्यू इज 1, बी वैल्यू इज 2. कितना होगा? 5/3 ओनली ना. Yes, sir. ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम 2025 में दिया. तो इसको प्रूव करना है तो भी आप यही लॉजिक यूज करना है. ये वाला लॉजिक. इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड. we are why we are converting, we are writing like this means we are representing this one in a semicircle. semicircle का जो रेंज है माइनस रियल नंबर टू प्लस रियल नंबर. एक्चुअली यहाँ पर भी माइनस R2 प्लस R लिख लो अब और अच्छा रहता. माइनस रियल नंबर टू प्लस रियल नंबर प्लस CR. then we get the value of integral over C f of the dz. and always we consider the positive poles only. Be Yes, careful. sir. We are taking only the positive poles. Positive poles only will lie inside the semicircle. So we are just converting this x को अपन z में कन्वर्ट करके z का रेगुलर वर्क कर दिया.
करके जो भी आंसर आ रहा एक्चुअली वो एक्स का ही आंसर, ठीक है। तो ऐसे yes, एक और क्लास आपको ऐसी यही टॉपिक पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ट्रीट करके थोड़ा सा मैं यही यूनिट को थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ, और थोड़े क्वेश्चंस में रिवाइज कर देंगे। योर सिलेबस विल बी कम, इट विल टेक वन मोर क्लास। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसको एक और क्लास में करना पड़ता। एक बार अगर अच्छे से पढ़ लीजिए आप, आपको समझ में आ जाता है कि क्या करना क्या है असल में, ठीक है। yes, और आपको अगर होमवर्क होना तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते, अदरवाइज मैं तो करने वाला हूँ कैसा भी। नेक्स्ट सेक्शन में इसका डिस्कशन होने वाला है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1/x² प्लस a²। सेम क्वेश्चन नहीं है, बी केयरफुल। हाँ, न्यूमरेटर में वहां पर x² भी था, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है और इजी है इंटू डी एक्स, इसको इवालुएट करना है नेक्स्ट सेक्शन में। थोड़ा बड़ा है ना, अभी मैं स्टार्ट करा तो भी कंप्लीट नहीं होता ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आप ट्राई कर ले सकते हैं, आपको एग्जैक्टली आपको आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अपन रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो फिर अपन इसको एक बार अपनी क्लास में देखना पड़ता है, जरा डिटेल में जाना पड़ता है। x² - x+2 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 10x²। कुछ भी नहीं है, x को z में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव पोल्स कंसिडर करना है और इसको सॉल्व करना है। इसका एक आंसर भी है, इसका आंसर है 5π/12। अगर आप कर रहे सक रहे इसको तो इसका आंसर है 5π/12। तो मैं हिंट दे दिया, देखो क्या करेंगे। तो मैं इसको हिंट देता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको हिंट दे दूँ। इंटीग्रल सर ओवर सी। समझा दीजिए ना नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन को। हाँ तो मैं समझा रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ खाली, अगर आप ट्राई कर सकते तो आपकी मर्जी बिल्कुल। ओके सर। मैं हिंट दे रहा हूँ, -r to +r f(x) dx प्लस इंटीग्रल CR to f(z) dz. So as you apply the limit r tending to infinity, ये जो क्वेश्चन है अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है and this value will become 0. Okay, and then we have to convert this into the our integral f(z) dz, and then we can see the poles and only the positive poles we consider, and we find out the poles at the positive residue at the positive poles and add them, get the value of f(z) which is also equal to f(x). खत्म। ये कंसेप्ट आपको मैं करता हूँ कैसा भी, आई विल डू इट। ऐसा नहीं है आप कर लो हो गया बोल के, नहीं बोल रहा हूँ। we have a class one more and most probably that is again tomorrow on same time only. I will do it, okay, you try otherwise। कोशिश तो आप कर यस सर। सकते हैं ना। राइट। मैं ये क्लास एंड अप कर देता हूँ क्योंकि आप अभी स्टार्ट भी करें तो जरा बड़ा है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। तो कल मैं कोशिश करता हूँ कि अब तो आपको बेसिक तो समझ में आ गया ना, रिवाइज कर लीजिए। कल ये दो क्वेश्चन भी करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। ओके। यस सर। ओके, लेट अस एंड अप नाउ।